डिस्कस करता हूँ. बी अवेलेबल हेयर. ठीक है. Okay. देन अमित से डिस्कशन हो गया क्या? अमित. Yes, yes. Hello. यस अमित. Yeah. We had Ask this. me whatever you want to ask. Yeah. No, Amit, I want to know in which company you are working, how much experience you have, in which domain Yeah, you are working. I am working in Vodafone Idea. Yeah, okay, Yes, I okay. have already discussed with you. Yeah. Yes, Na? yes, yes. Sorry, so sorry. Yes, yes. Yeah, Then no problem. Abhishek. Hi, sir. I have total 3.5 years of experience in telecom domain, and right now I'm not doing any job. And in my last company was Vedang Silver. I don't know whether you have heard about it or not, I but know, I know each and every company I know okay, because okay. one of the candidate Amit Rawal is there and Ashish Kapoor is there. Yeah, yeah, Okay. yeah. So Yes, Abhishek, yes. I want to know why you left the job or what is the reason behind this? I want to know. Actually, there was no job satisfaction, and obviously, I was not getting much salary there, and the working environment was not much happier there. So that's why I left the job. So in which profile you are working on that time? I was working as a team coordinator, but you know, it doesn't make sense whether you are working as a team coordinator or whatever your profile is. You have to do Okay. all the jobs whatever they will ask you to do. So I think your life was hell, like call center, Yes, incoming exactly, and outgoing, right? exactly. You are arranging team, DT, गाड़ी घोड़ा, huh? Yes, yes, है ना? yes. That was the life there. Okay. Then we'll discuss with Vijay. Vijay? Yeah, Vijay, you can unmute yourself and introduce yourself. Vijay, Vijay, if you feel not to give answer, please left out yourself. Not required to hear. Those who are not interested to give introduction about yourself, not required. Even company is not selecting this type of candidate. I'm right or wrong, guys? Yes, sir. Yes, yes, absolutely right. Yes. I think he's not there. Okay, let's Rahul Raghav. Hello. Yes, Rahul. Yes, sir. Hello, sir. Yes, Rahul. Tell me about yourself. What was your experience? How many years of experience you have? In which domain you are working? Sir, currently I am not working anywhere, and I have total 7 year experience in RF domain, and I left job as a RF engineer in Zen 2023. I think we have already discussed in last December while I was in South Africa linked company, as you know. So, Rahul, you I think you joined some of the course, right? Yes, yes, yes. We had discussion. What was your course? That course I have left because that is not uh, means they have left that course in after 10 to 15 days. So and I also came back to India, so I also not done that course. Okay, so Rahul, you can share me your CV by tomorrow. We have opportunity 6 to 7 lakh in Mumbai and Delhi NCR. Okay, Okay, we have okay, collaboration with Marcus Tech for protocol testing, field testing engineer. So we have 40 plus opportunity available as of now. okay, 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 so we'll start your career again in short time of period. okay, okay, okay. Fine.
Then Vijay, are you there? So we'll come on Jagdish Sharma. Jagdish. Whenever I am asking Jagdish leaving now. Okay, no issue. Why people join? सब जो समझता नहीं तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए. विमल से हो गया. विमल टेलीकॉम में जॉब करोगे? सर कोई अच्छी जॉब होगी तो बिल्कुल करेंगे, जहाँ पे सीखने को मिलेगा, कुछ करियर ग्रोथ होगी वहाँ पे. हमारे साथ सीखने वाले हैं यहाँ पे 10-12 साल एक्सपीरियंस से लेके. एक्चुअली सर अभी मैं कंफ्यूज हूँ किस डोमेन में जाना चाहिए, आरएफ और टेस्टिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं. विल डिस्कस. सोनांचल. Yes, sir. Yeah, Sonanchal, tell me about yourself. What was your previous experience and how many years of experience? Which type of job you are doing? So 2 year experience telecom sector and सर अभी यूनिफॉर्म पे ही है, वर्किंग चल रही. यूनिफो इंदौर जंजीर वाला. Yes, sir. So which type of job you are doing? क्या काम करते हो वहाँ पे आप? सर रिपोर्ट मेकिंग का. लाल हरा पीला. Yes. So Sonanchal, don't mind. 2 साल का एक्सपीरियंस है. What company is paying behalf of work? कितना पे आउट है आपका इस कंपनी में? सर हो गया ऐसे 15-17. आप कहाँ से हो सोनांचल? रीवा से, पटना से. अच्छा, मेरा नंबर है आपके पास? यस सर. तो क्लास के बाद मेरे को आप कॉल करना है. कल कॉल करना दिन में, ठीक है? विल डिस्कस समथिंग बेटर. ओके ओके. देन विजय, आर यू देयर? विजय ने भी सोचा है नहीं बोलना है, सब कुछ सुनना है. तो भाई विजय सुनते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन विल कम विद प्रवीण. प्रवीण, देखो भाई प्रवीण, प्रवीण को भी नहीं बोलना है. हु इज एमडी? MD. Sir, this is Mohammed Salim from Bangladesh. No. Yeah, Mohammed. I know. I am talking. Oh, yes. One candidate joined with MD name. MD, are you there? Okay. Deepak, can you remove MD Vijay? Not required to hear. Then Mazir Ansari. Mazir Ansari. Harvoje. Yeah, Harvoje. Yeah. Is it me talking? Yes. Yes. 10 plus years in Europe, seeking for job, ex RF planning engineer. Right now you are in RF planning engineer, right? Yup, yes.
Okay. How many years of experience in RF planning? 10. 10 years. Okay, great. So I think in your country 5G's deployment is going on, right? Yes. Which operator is there? It's Vivacom. Vivacom. Okay. Any other operator? Yes, Yetel and Airtel. Okay. A1. Airtel. Most of the country Airtel is available. Sorry? Most of the country Airtel operator is available. In how many countries you mean? No. Most of the country Airtel operator is there. Okay. Yes. Yes. Sorry, please. No issue. Then guys, anybody left to introduce yourself? अगर कोई बच रहा है तो अपने से बताओ. Now we'll discuss with Yogender. Hi, good evening. Yeah, go Yogender. Good evening. Yes, sir. Sir, I am currently in a transmission planning, in microwave planning. Microwave planning. Okay. Yes. In which company you are working? Erection, Ericsson India, Ericsson Global. India. Okay. Which project you are looking as of now? Currently, we are looking Geo for E-band. Okay. Working for 3500. what? 3500. No, 7600, है ना? 700. हाँ जी, 1000. Okay. Sir, 1000, 7000. 7000 है क्या? 35,000 और 7,000. 76,000 से वो है सर, 72 से 82,000 फ्रीक्वेंसी बैंड है माइक्रोवेव, इन माइक्रोवेव में. तो प्लानिंग में क्या फॉलो हो रहा है रूल? जैसा कि लास्ट जियो ने फॉलो किया था 1:4, 1 फाइबर साइट टू कनेक्टेड टू 4 माइक्रोवेव. नहीं सर, यहाँ पे 1-to-1 चल रहा है ना. अच्छा, 1 फाइबर टू 1 माइक्रोवेव. हाँ, 1-to-1. 1-to-1. टेक ऑफ टू साइड ओनली. फाइबर टू नेक्स्ट साइड ना, ओनली रिंग साइड स्टार टोपोलॉजी चल रही है. Okay. Our previous experience was not good with microwave planning in Reliance Jio. I was a part of Reliance Jio in NHQ. I spent around 5 years. Okay, and I was a part of Ericsson and spent around 7.5 years in Kolkata. Okay. So I know all operator, vendor, and all. जी. Okay. So guys, how was your life in telecom? अभी 1 by 1 हमने डिस्कस किया. अभी मेरे को रिजल्ट चाहिए. टेलीकॉम में आपको क्या नहीं मिला है? Still candidate wants to move in different domain like protocol testing or SIP and IMS. Why? I think salary and work-life balance is not there. That's why. Only two things or other? Less So salary वर्क प्रो एक्सपीरियंस के नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से सैलरी कम आता है. फिर आता है जो एक वर्क लाइफ बैलेंस कभी कभी होता है ना, अगर मैक्सिमम 24 आवर्स ड्यूटी जैसा हो जाता है, कभी कभी कॉल कभी भी आता है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा. उसके अलावा जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, मेरे को निकल के जब तक नहीं आएगा विल वेट. टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, मतलब हम चेंज हो रहा है में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है उसका कोई नॉलेज नहीं है. 1 by 1. Yeah, actually in future there is no need of RF engineer. Actually all services are going to automated mode. That's why there is future is not good in RF. I think so. Any other? So to me, it's like sir, whenever I doing for any customer complaint analysis,
in that time. I did not find any solution from the rent side. I mean, I identified any cost for the from the radio side. Then whenever I need to go through the other side, I mean, core side, MSC or others, net others domain. When in that case, then I cannot do anything. So I would say, sir, RF plus this SIP and IMS protocol. If you get a good knowledge on the SIP and IMS, then we can easily correlate anything, any problem. To me, is like that, sir. Okay, great. Any other? क्वेश्चन फॉर ऑल, सबके लिए है क्वेश्चन. क्वेश्चन इज कॉमन. मेरे को सबसे. यस राहुल. अपने आप को सर अपग्रेड के साथ साथ में ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो वो एक चीज जो मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं हो पा रही है. जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है 7 ईयर और 8 ईयर्स प्लस, उसके साथ में एक तो अपने आप को जैसे अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड जैसा कुछ नहीं हुआ, उसके साथ साथ में ग्रोथ भी हमारी जो रुकी हुई है उसके पास. Okay. वो नहीं कर. चलो राहुल, आपने ये बोला 7 साल का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है. गाइस, डोंट टेक अदरवाइज, डोंट माइंड एनीथिंग. आई वांट टू नो द थिंग विच थिंग चेंज योर लाइफ. वो आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं मैं. अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने आप को अपग्रेड या तो हम कर नहीं पा रहे हैं, या मतलब जो भी है पढ़ने का जो मेन मोटिव है वो हमको पता नहीं है. कहीं ना कहीं सर वो मिस हो रहा है वो हमसे. राहुल, 7 साल के करियर में आपने टेलीकॉम से क्या सीखा है? ऐसी क्या यूनिक स्किल है आपके पास जो आफ्टर 7 ईयर टाइम स्पेंड करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि मैंने ये सीखा है? सर मैंने सीखा तो लेकिन बहुत कुछ, लेकिन सर मुझे मेरी सर उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने सीखा उस हिसाब से सर मेरी ग्रोथ तो सर नहीं हो पाया. पहले मैं सर डीटी ड्राइव टेस्ट किया, ड्राइव टेस्ट के बाद में मैंने रिपोर्ट मेकिंग भी किया, उसके बाद में रेडियो नेटवर्क ऑप्टिमाइजर भी किया, बाहर भी घूमे आया सर, आरएफ इंजीनियर और रेडियो नेटवर्क ऑप्टिमाइजर, यहाँ पे बाहर के प्रोजेक्ट भी काफी देखे. उसमें देखा मैंने 7-8 साल से मैं वही पहले मेरा जो स्टार्टिंग था वो 10-12 हजार से था. 10-12 हजार से मैं देखता हूँ 7 से 8 साल हो गई वही, मतलब 30-32 हजार से कभी आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया. जिस भी कंपनी में जाओ सब वही की रिपोर्ट मेकिंग और उसका आरएनओ, और ये कंपनी को साइट से नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, बस वहीं पे ही हमारी जो है वो ही चल रहा है, मतलब लाइफ में घूम फिर के वहीं पे आके अटक जाते हैं कहीं भी. मेरे साथ में तो सर ये हुआ है सर, जैसे मैंने देखा है, और मैं बढ़ भी नहीं पाया मैं सर आगे जो उसमें. अब पता नहीं सर उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें मेरी मिस्टेक है या ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को अपग्रेड भी नहीं किया है. एग्जैक्टली. जी. देखो क्या है कि कोई भी कैंडिडेट हो, ह्यूमन नेचर होता है. एक तो आपने जो काम किया है और टावर टेलीकॉम में काम किया है, ठीक है. चाहे वो आपका एक्सपीरियंस 0 ईयर का हो, चाहे 12 साल का हो, आपने टावर के अलावा कुछ देखा ही नहीं है. नहीं देखा सर, बिल्कुल. टावर देखा है, टावर के 3 एंटीने देखे हैं और उसी को राइट लेफ्ट किया है. 180 डिग्री में जितना घुमा सको घुमा दो, या 183 में ऊपर नीचे कर दो, बस. ये 12 साल वालों के लिए भी यही है. जी 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 जी. अमित, आई एम राइट और रॉन्ग? यस यस, एग्रीड एग्रीड, टोटली एग्रीड. है ना. और क्या है कि 2-4 पैरामीटर भी अगर आप चेंज कर लोगे तो कौन सा आप 30 मार्क का खान हो जाओगे. नॉट. यस यस यस. A3 A5 कर लोगे, A1 A2 कर लोगे, लोड बैलेंसिंग कर लोगे, लोड बैलेंसिंग कर लोगे, सीआरएस गेन बढ़ा दोगे, इनेबल कर लोगे, TX तुम 9 कर लोगे, 3-4 की जगह तुम IMO चला लोगे, सीआरएस गेन बढ़ा दोगे. हाँ, CRS गेन तुम्हारा देख लो, सेल रेडियस देखो, और बीम फॉर्मिंग देखो, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है. नो नो, है ना. स्टिल वी डिडंट हैव नॉलेज अबाउट प्रोटोकॉल. हाँ, तो अभी देखो 7 साल हो गए हैं. अभी अगर कल लास्ट मेरा डेमो था संडे को,
I was Okay. tracking demo 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग. वहाँ पे Okay. एरिक्सन का डिलीवरी मैनेजर, टेक महिंद्रा का सर्विस डिलीवरी मैनेजर, हाँ. और एक्सपीरियंस अराउंड 20 प्लस, 22 Hmm. 23. I asked one question only. Hmm. Both are told me I have experience around 20 plus experience. बहुत देर तक Hmm. डिस्कशन हुआ. Finally I अच्छा. asked one question. तो उनका कहना What? था कि जस्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. उनका कहना था कि 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड टू मी स्टिल? तो उनका आंसर पे खुद से ही आया कि यार हमने अपग्रेड नहीं किया. तो आई आस्क्ड वन क्वेश्चन, कैन यू टेल मी वन सिंगल एलटी कॉल फ्लो फ्रॉम स्टेप 0 टू स्टेप 21? Hmm. बोथ आर स्टक ड्यूरिंग पता होगा सर. आरआरसी कनेक्शन सेटअप सक्सेस रेट के बाद कोई आंसर नहीं मिला. नहीं और मिल मेरे पाया. को बैंड स्कैनिंग फ्रेम प्रोटोकॉल में तो यही होता है ना, फ्रेम Hmm. वेबडीएम सिंबल रेट पे बात करते हैं. Yes. 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 ठीक है. तो मैनेजर ने बोला यार आई स्टक आल्सो इन करियर. 20 साल का एक्सपीरियंस, पैकेज 20 लाख. ठीक है. Hmm. तो इन चीजों का रीजन हम खुद हैं. कंपनी की ग्रोथ तो बढ़ गई ना, और 2G से वो 5G पे आ गए, 4G से वो 5G पे आ रहे हैं, CS से वो PS पे चले गए, PS से IP पे चले गए, लेकिन हम आज भी वही टावर टेलीकॉम में हैं. और जब हम सेम काम करते रहेंगे, मतलब पहले साल भी वही किया, सेकंड में भी वही किया, तीसरे में भी वही किया, ओके, और फिर 5 साल बाद देखते हैं यार अब तो यही करना है, तो जैसे चल रहा है चलने देते हैं. ऐसे होता ना. Yes. अब जी जी. इसी में काटना है अपने को जो काटना है. Hmm. Who is sharing screen? Ajay? Only hand is raised. Yeah. Can I ask? Yes. Yes. Is, seems like I'm minority here, and speaking English would appreciate the No. conversation is very Actually, interesting. Very interesting. I am discussing about the journey since candidate joined in telecom. It's very interesting. So I would like to hear it, understand. I mean, if not a problem, in English. I am discussing about candidate joined in telecom. Okay. In the start of the career, okay, and after 1 year they are doing same thing. After 1 year they are doing same thing. After 5 years they are doing same thing. After 6 years becomes problem. Okay. Same things we are doing since long year. So this thing we have to do in next 5 years. So on that time we are not learning new technology, whatever is in market going on. That is the problem of human. Why telecom candidate are still struggling with less income, unsatisfied life? I am discussing. Yes, I agree. Every word. Everywhere in the whole the world. The same everywhere. Yes. So then just a minute, guys. So now अभी हम पॉइंट पे आते हैं. Arvajo will discuss something in Hindi and will translate for you. Okay. Okay, perfect. Because most of the candidate from India or they want to listen in Hindi. That's why we are using. Okay. So whatever we will discuss in Hindi, we'll translate. No issue. So Amit. Yes. I'm right or wrong? जो डिस्कशन मैंने बोला Yes, उसके you are पीछे absolutely right. तो
तो हम ही लोग रीजन है, हमने Yes, अपने yes, आप को there is अपग्रेड नहीं lack करा of, जैसे, yeah, है ना। yes. और कंपनी के मैनेजर और मैनेजर के ऊपर मैनेजर का पैकेज तो आराम से बढ़ेगा, है ना। Hmm. जब बात आती है रिसोर्स की कि भैया तुमने क्या किया साल भर में, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तुमने भले ही No, कितने एंटीने झुका yes. दिए हैं, कितना ट्रैफिक कम कर दिया है, कितना ट्रैफिक बढ़ा दिया, nobody is looking your effort, especially in telecom. Hmm. सोनांचल, Yes, sir. आप कितना भी रिपोर्ट बना लो, आपका मैनेजर बोलेगा कम ही बनाई है आपने, Yes, sir. और फिर बोलेगा यार ये गलत हो गया। बोले यार इतना तो पैसा भी नहीं मिल रहा है कि अपने ऊपर बोले कि गलत हो गया। हाँ Yeah. सोनांचल, जो आप काम कर रही हो ना, इसमें एरिक्सन में जो इंजीनियर रहते हैं वो मिनिमम 5 से 6 लाख के पैकेज में रहते हैं, और वो 4 घंटे काम करते हैं केवल। जी। ठीक है, तो ये जब से ये थर्ड पार्टी कंपनी आ गई है तो और भविष्य खराब किया लोगों का, That's the reason. है ना। ऑपरेटर देता है Yes. 1 लाख, एरिक्सन को मिलते हैं 1 लाख, एरिक्सन थर्ड पार्टी को 70,000 में दे देगा। बीच उससे में भी कोई और आ अगर कोई जाएगा। पार्टी होगी तो और कम हो जाता है। हाँ, थर्ड पार्टी के बीच में करने वाले भी आ गए ना, बोले कि मैं तो 50 में बहुत करा बहुत, दूंगा। जो एक का है वो जाके 20-22 पे आ जाता है। अच्छा ये बताओ, टेलीकॉम में सैलरी को लेके कितना सेटिस्फेक्शन है? सैलरी, किसकी सैलरी यहाँ पे 25th को आती है? I am getting on 27th. तो जियो वालों का सर वो शेयर डेट हमें 25 27 को रिसीव मैंने करते हैं। 25th को डेट को सैलरी की बात करी है कि आप उसी महीने में 25 तारीख को सैलरी किसको मिलती है? सर जो पे रोल पे हैं 25 को तो नहीं मिलता, हम लोगों का 27th को आता है जियो का। जियो का लास्ट वर्किंग डे के दिन आ जाता है, फ्राइडे अगर रहेगा तो 27-28 में आ जाएगा। ऐसी कोई कंपनी में है बंदा जो 25 को सैलरी आती है? तो सोनांचल, आपका एरिक्सन तो एक रोल्स को मिलेगा। एरिक्सन रोल पे आता है और सॉफ्टवेयर कंपनी में एरिक्सन रोल पे आता है। यस सोनांचल, हाँ, आपकी हाँ। कंपनी में तो 1 महीना 25 दिन बाद आती होगी ना? तो सर हमारा कुछ क्लियर ही नहीं रहता, कभी 25 को, कभी 27, कभी कुछ ऐसे ही आता। 2 महीने बाद आती है। सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यार मैं 5 मिनट लेता हूँ, मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज ज्वाइन टेलिशिया एट द 2009 समथिंग। ओके, ओके। मैंने आई वॉज इन टेलिशिया एंड आई एम लुकिंग प्रोजेक्ट आइडिया 3G रोल आउट इन महाराष्ट्र, पुणे। ओके, एंड उस टाइम पे मैंने 1 वीक मैंने SCFT किया था, मेरे को ट्रेनिंग मिला था, SCFT किया मैंने। इसके बाद मैं क्लस्टर मारता था, क्लस्टर की रिपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, नीला हरा पीला मैंने किया। पुणे का 10-12 क्लस्टर किया था। हाँ, तो ऑप्टिमाइजेशन किया था, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बराबर। उस समय तो इलेक्ट्रिकल टिल्ट भी नहीं थी, ठीक है, मैकेनिकल ओनली ना। हाँ मैकेनिकल ओनली, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। 2 बैंड थे आई थिंक, या एक ही बैंड था, और 2G के 2 बैंड थे। हाँ। उसके बाद और मैं पुणे इसलिए गया था, मेरी फैमिली में भैया थे मेरे, वो आर्मी में थे। हाँ। तो पुणे में तो वैसे भी कमांड हाउस पास में ही है ना, आर्मी एरिया, रेलवे स्टेशन के पीछे। यस यस। तो मेरे को रहने खाने की कोई दिक्कत थी नहीं, दैट्स व्हाई मैं ज्वाइन किया टेलीकॉम। 3 महीने बाद मेरे को पता चला कि तुमको जाना है कोल्हापुर, सोलापुर। एंड फिर बोले यार नागपुर चले जाओ तुम तो। I was getting salary around 25,000 and 30,000 for घोड़ा। घोड़ा मतलब गाड़ी के मिलते थे, गाड़ी। यस यस यस, है ना। तो घोड़े के 30,000 और मेरे 55 हो गए, उसमें ही 5,000 बचा लेते थे गाड़ी में। हाँ, तो आई वॉज गेटिंग अराउंड ऑन 30,000 एंड आफ्टर 3 मंथ जब मेरे को बोला गया यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, तो मेरी फैमिली, मेरी भाई साहब बोले यार कहाँ जाओगे, अभी तो मेरे पास थे तो यहाँ पे रुके हुए थे, अच्छे से रहना खाना सब मस्त चल रहा था, शाम को पार्टी भी हो जाती थी, आर्मी में तो वैसे ही मिलती है। तो उसके बाद मैं स्टक हो गया। 2-3 दिन तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मेरे को जाना है नहीं जाना। फाइनली आई क्विट द जॉब
I Oh, went to साईं बाबा मंदिर. okay. मैंने जाके शिरडी में दर्शन किए बाबा के. एंड Hmm. देन मूव्ड फर्दर. टेलीकॉम मैंने छोड़ दिया. आई ज्वाइन एज अ वीओआईपी इंजीनियर. वहां पर जस्ट 8 Okay. घंटे का काम था. वी आर मॉनिटरिंग इंटरनेशनल कॉल which our Indian traffic going to US or Europe. So it was related to telecom or other domain? It's related to telecom, but VoIP, Okay. voice over IP, Okay. 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 where I'm monitoring ASR and SED. I'm looking some servers, those who are carrying Okay. traffic. 4 लाख कॉल चलता. नंबर ऑफ कॉल्स 4 लाख. नाइट में स्टार्ट होता Hmm. था, मॉर्निंग तक जीरो हो जाता था. माई Hmm. ड्यूटी आवर वाज लेफ्ट. नोबडी कॉल मी. Okay. कोई मेरे को कॉल नहीं करता. ऑन दैट टाइम आई एम गेटिंग in Telisa 25,000. I joined as like in package around 6.5. Great. So this is the whole thing. Telecom मैंने सही समय पे छोड़ा था. Now I am working as a consultant for supporting for company in IMS Okay. domain. तो क्या होता है, एक डिसीजन टाइम पे. भी कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने छोड़ दिया, मैं स्टक हो गया 4 साल 3 साल 5 साल. तो टेलीकॉम में जनरली चलता है. लोग थक जाते हैं 6 महीने, घर चले जाते हैं वापस. फिर आता है लगे यार चलो करते हैं, प्रोजेक्ट आ गया. हमारी सैलरी थी 35,000. कोई बोल देगा यार 25 देंगे, हमारा भी मन हो जाए चलो यार अपना लक तो उड़ाते हैं, चल देते हैं. ऐसे ही होता है जनरली. Hmm. Hmm. दैट इज द रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम कि आज हम भले ही ऑन रोल हो गए हैं. कुछ लोग ऑन रोल भी हैं, कुछ लोग वेंडर में हैं ऑन रोल, कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं. लेकिन भविष्य सबका चौपट है. 10 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एटलीस्ट 25,000 लाख का पैकेज होना चाहिए. Yes. आपने ही इंजीनियरिंग I करी है, agree. और CS और सॉफ्टवेयर में जाने वाले बंदे ने भी उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है ना. Yes. Yes. And they are तो getting 25 to 30 lakh in only 10-year experience. यस, व्हाई यू अफ्रेड अबाउट सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर है तो हमको नहीं बनेगा. Hmm. टेलीकॉम मोस्टली उन लोगों ने ज्वाइन किया है जिनको इजीली जॉब मिल गई. भाई जॉब है क्या? Yes. अरे यार Yes. मैनेजर से बात कर ले यार. अच्छा पैरामीटर RSRP RSRQ साइनर. Hmm. अच्छा अरे ठीक है, थोड़ा गलत बताया, बुला लो उसको, 20,000 दे देंगे, हम पहुंच गए. ले भाई ये लैपटॉप ले, मोबाइल और निकल ले. ऐसे ही हुआ. Hmm. अब लगता है कि भारी हो गया यार. 7 साल हो गए साले को. कुछ लोग थे हाँ. इंडिया में काम करके थक गए भाई, चले गए साउथ अफ्रीका. Hmm. ठीक है, वहां भी स्ट्रगल करके. राहुल तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. लॉट्स ऑफ कैंडिडेट इन साउथ अफ्रीका. कि तुम सोचो नहीं कि नहीं सर, मेरे वो को फैक्ट टारगेट है कर सर, रहे हैं. वो फैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने में सर. ऐसा हुआ है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर. अभी क्या है कि बंदे वहां भी जाके कोई 50,000 मिल रहा है, किसी को 75,000 मिल रहा है. इनने सोचा कि यार इंडिया में हम 25 में काम कर रहे हैं, चलते हैं वहां पे. बंद हो कमरे में, अपना खा रहे हो पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, 50,000 रुपए बचा रहे हो. बट स्टिल आना तो है ही है ना अपने को रिटर्न. जब तक स्टेबल जॉब या तो वहां मिल जाए चाहे यहाँ मिल जाए. हाँ सर, बाहर बाहर तो सर पैसे के लिए ही गए थे जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वरना सही बोले हैं सर आप, यही होता है. एक राहुल यादव था मेरा प्रीवियस कैंडिडेट था. वो ठीक है. अभी भी सर वही है, अभी भी वही हाँ है अभी वहाँ. भी है. उसके अभी पैसे खत्म हो गए, फिर चला गया वो. हाँ, वो पैसे खत्म हो गए, रिजाइन दिया है था, फिर उसके बाद फिर दोबारा चला गया था. अभी उसको अप्रोक्स 90,000 कुछ मिल रहे हैं उसको वहाँ पे. हाँ अभी फिर आ जाएगा रिजाइन मार के. हाँ, वो आने वाला है कुछ ही टाइम में. इवन आई ऑफर्ड राहुल 7 से 8 लाख का पैकेज में तुमको दिलाता हूँ जी. मार्केट स्टेक में. बट लोगों को आदत हो गई ना मोबाइल लेके घूमने की. यार प्रॉब्लम तो वो है. अमित, Yes. चाहे अपना एक्सपीरियंस 10 साल का क्यों ना हो गया, आप भी मोबाइल लेके जाते हो ना कस्टमर कंप्लेंट में. Yeah. Yeah. Sometimes I also need to go in field na. Yes. 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 So guys, we'll take some break and we have another colleague, Mr. Vikas. Okay. Mr. Vikas, take your next 30 minutes about the technology or motivation and all. Then catch you later. Give me 25 minutes only. Vikas, are you there? Yeah. Yeah, good evening all. Yeah.
Good evening, good evening. So you all asking the all questions, whatever in your mind, right? Yes. Okay. So any question apart from that things, whatever Aarav has been said to you? अभी ये बताइए, अभी देखो यहाँ कुछ कैंडिडेट्स आउट ऑफ इंडिया हैं, कुछ इंडियन से हैं, राइट? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई इशू नहीं, राइट आपको? No, you can use English also, na? If it's not a problem in English, we speak, because there are some people from outside of India. Yes, exactly, HR. Actually, we are also just check you continuously raise the hand only due to the language, right? Yeah. Is it the problem? No, actually, I was working in 3 UK reading, so that's why I can understand your feeling. Okay, I mean, I'm sure that the people in India are speaking and understand quite good English, and I hope it's not a problem. That you speak No, it means you are right, but actually, the theory was that actually, if I will try to learn in the English, right? So some of the pupils are not clearly in the English, so that's why we have to use the Hindi word as well. Yeah, but no issue on that. Means we have to translate on that, right? And any other person are from means not from the India. I think AM Anul Islam, right? Anul, I think it's not there. So any other question, HR? Means you have any question apart? Yes, from I have a question, sir. Yeah, please. I have a question. Yeah. सर एक्चुअली जो सर ने बताया कि जो कुछ जिसको कुछ नहीं मिलता वो टेलीकॉम में आ जाता है, ये सही बात है? तो मेरा सवाल ये है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरा टेलीकॉम का जो था वो 4-5 साल हो गया, लॉकडाउन में 2-1 साल बीच में चला गया मेरा। तो मेरे सर ने मुझे इसका रिकमेंड किया था, भाई ये कोर्स बहुत अच्छा है, तुम कर सकते हो। तो मेरा सवाल है कि मैं जो डिपार्टमेंट से हूँ उससे क्या एक कोर्स करके मेरा करियर क्या अच्छा हो सकता है क्या? ओके, देखिए अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रहा है? मैं अभी टेलीकॉम में डीटी में ही हूँ। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अभी विच टेक्नोलॉजी आर गोइंग इन द मार्केट? समझे नहीं सर। टेक्नोलॉजी कौन कौन सा चल रहा है मार्केट में? टेक्नोलॉजी मीन्स आप कौन कौन सा सिम खरीदते हो? 4G, 5G, 3G चल रहा है अभी, राइट? 3G, 2G, 4G, 5G, राइट? वो तो है। सभी, हाँ, तो सभी में क्या होता है, वॉइप चलता है, ठीक है? सभी में वॉइप होता है, अपना SIP फ्लो होता है। अगर मैं लेगेसी में बात करता हूँ 2G, 3G में, तो वहां पर SIP चलता था, बट वहां पे पॉइंट कोड यूज होते थे। 4G, 5G ये आया, यहाँ पर अपना SIP ही जाता है इसमें, बट ये अपना IP बेस है, ठीक है? तो अपना SIP तो स्टार्टिंग से SIP ही चल रहा है, पहले पॉइंट कोड से होता था, अभी IP से होता है, ठीक है? तो अभी जैसे आपने बोला कि करियर को लेकर के, तो करियर को लेकर के यह है कि देखो आपका SIP और IMS ये 2 चीजें हैं जो कभी आपकी एंड नहीं हो सकती। उसका रीजन बता देते हैं पहले। जैसे आप अभी अपना 3G आया था, तो 3G में कॉल्स लगती थी, ठीक है? तो वो भी अपना वॉइप कॉल लगता था। उसके बाद आप स्काइप कॉल करते थे, टीम्स कॉल, व्हाट्सएप कॉल, व्हाटएवर कॉल भी है, सो सभी में आपका वॉइप चलता है। उसके बाद आते हैं 4G आया, 4G में आपको सभी टेलीकॉम से, तो आई थिंक CSF भी आपने सबने सुना होगा। तो 4G में आया तो कॉल्स 4G में नहीं लगती थी, वो फॉल बैक होकर 3G में जाता था। इसकी वजह से उन्होंने वोल्टी लेके आए, राइट? तो वहां पे आपका IMS काम आ रहा है। 5G में चले जाओ तो VONR में क्या होता है, 5G के नोड बीच में आते हैं, 5G सर्वर्स बीच में आते हैं, लेकिन होता क्या एग्जैक्ट में, कॉल आपकी IMS में लगती है, ठीक है? तो SIP एंड IMS की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हर एक टेक्नोलॉजी में आपका यूज होता है। एज वेल एज अगर आप मतलब कहीं देखो, अभी SIP IMS तो एक जस्ट प्रोटोकॉल है, राइट? प्रोटोकॉल के अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं, UE टेस्टिंग होता है, SIP IMS टेस्टिंग होता है, राइट? तो जब आप SIP और IMS टेस्टिंग भी करते हो ना, तो वहां पर भी आपको UE से ही टेस्ट करना होता है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जब आप UE से टेस्ट करोगे तो UE का पोर्शन भी आपका क्लियर हुआ, देन SIP IMS तो आपके पास फिर रहेगा लास्ट में। देखो ये टेलीकॉम IT ही है, बट हाँ ये टेलीकॉम IT ही है, ये बस इतना फर्क है कि आप अभी RF या रेडियो या BTS लाइन में रहे, राइट?
यहाँ पर हमको बिफोर दैट जो चीजें अपने को टेस्ट करनी है टेलीकॉम आईटी ही है। ना, मेरा सवाल था कि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है, तो मैं जब इंटरव्यू में अटेंड करेंगे तो क्या मुझे it doesn't matter about your stream, means whatever subject you have in your graduation na, so it doesn't matter on that. If you have the knowledge in any protocol, not like that the SFI and IMS, anything you have, so then you can be applied, because the most of the companies will hire and will have to just spread your JD, and it's mentioned all stream, not the specific stream EC and CS like that. They have mentioned the all stream, so mechanical is not the mandatory. Okay, thank you, sir. Thank you. Any other? ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या अमित? SIP और IMS के अलावा डिफरेंस क्या होता है सर मेनली इसमें दोनों के बीच में? देखो SIP आपका क्या है, SIP आपका सिग्नलिंग प्लस मीडिया होता है, ठीक है। जैसे अभी हम मान लो, जैसे मैं और आप, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, राइट, तो हमारे बीच में मीडिया चल रहा है, ठीक है। अब वो किस नोड से जा रहा है, किस सर्वर से होके जा रहा है, वो आपके IMS के नोड होते हैं। वहाँ पर IMS मतलब पूरा IP मल्टीमीडिया होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे सर्वर्स लगे हैं, तो जैसे मैंने आपको कॉल लगाया फॉर एग्जांपल, तो जब मैं आपको कॉल लगाऊंगा तो मेरा उसमें क्या सिग्नलिंग होगा, प्लस साथ में मीडिया भी चलेगा, राइट। तो अपना सिग्नलिंग प्लस मीडिया के लिए SIP यूज करते हैं, और उस कंप्लीट अपना जो प्रोसेस होता है जिस सर्वर के थ्रू, वहां पे हमारे IMS के सर्वर लगते हैं। और हर एक किसी का सर्वर्स अलग अलग होता है, वॉइस कम्युनिकेशन का अलग है, कॉन्फ्रेंस करने के लिए अलग है, फॉरवर्डिंग के लिए अलग है, तो मल्टीपल सर्वर्स होता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? देखो कैसा भी क्वेश्चन हो, नॉट ओनली कि अभी कोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं कि टेक्निकल में क्या पढ़ना है, क्या कितना टाइम लगेगा, मतलब कैसा भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो अभी। सर ये सिप SIP और IMS तो किसमें बेस्ट है, किसके अंदर जाना चाहिए, ऐसा कुछ? दोनों रहेगा। देखो एक सिंगल से कुछ नहीं होता है। देखो वॉइप की सेपरेट कंपनीज भी हैं, और सिप IMS से देखो IMS भी अलग से नहीं चलता है। अगर आप IMS में भी स्विच करोगे ना, तब भी आपका SIP काम आएगा। और सेपरेट वॉइप के लिए भी कंपनी है, ऐसा नहीं। देखो अभी अगर मैं US की बात करूं, तो US में, अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग इन द वॉइप ओनली, क्योंकि वहां पे अभी कुछ जगह अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वॉइप चलता है, वहां पे IMS का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक आपको जो कंटेंट है वो सिर्फ IMS बहुत है। Hello, sir. I'm Turjo. Hello. Yeah. Hello, sir. I'm Turjo. Actually, I passed my BCA from University of Engineering and Management. After that, I have done my post graduation from IIT Roorkee in data science. Okay, sir. In data science. In data science, and I have done my capstone project in electronics and telecommunications in Telco Chan. So I was working in Signal Private Limited as a data analyst. After that, I joined as a DT engineer because I have my brother who is working in Ericsson. As I want to shift my career into data science in the telecom industry, so I shifted my domain from as a data analyst to DT engineer. Now, currently, I am working as a DT engineer. For 2 months, I have worked as a DT engineer only for domain knowledge, as I want to get into the data field into the telecommunication department. So my question to you was, sir, what is the best approach for me so that I could get into the data domain? Okay. So first, could you let me know how many experience you have, and because currently you are doing as a DT engineer, means RF radio, and then total how many experience you have? Actually, I have 2 years experience in data analyst. Okay, it means not like that. Means not like any domain. Means just total experience 2 years after completing your study. After completing my study, I have total experience. I have around 3 years. 3 years you have, right? I was, because I have 1 year, I have not written my experience. I was working in IPAC also with Prashant Kishore. Okay.
Because my domain was completely changed, so that I came into after completing my graduation also BCA. Okay, I have worked with Prashant Kishore. I was a district manager in IPAC, Indian Political Action Committee. Okay, so I was into a data team. Okay, I was into a data team. Also, I was a data analyst. Okay, after that, I have done my post graduation certifications from IIT Roorkee in data science. I have done in telco project also. I know Tableau and all the stuff, and I have won 3 hackathon championships. Okay, but my brother was in Ericsson. He was in top positions. Okay, my big brother was in Ericsson. He was in top positions. He told Tojo, this is not your domain. Just for 2 months for the domain knowledge, you just come to DT so that you know how to do. So you will get a brief domain knowledge about the telecom industry. After getting up after 2 months, after doing 2 months in DT, okay, I am thinking to change my domain to apply for another position or something. So, what is your advice, sir? According to, because you are highly experienced. Okay, so could you just What let are the me know, companies I Miss? can apply for data? Okay. Okay. First, you just let me know a few questions. Means what is the domain you are good in? Data science or in DT? I'm good in data science because two plus years of experience in. No, because I have a good programmer. Miss. Why I am asking this question? Actually, you have spent 2 years in the data science, and you have just switched in the DT engineer. So that's why I have asked the one question. Okay, so Miss, you are good in data science, yeah? Okay. Data science, and I have done my capstone project in telco churn. Okay. Telco churn. Telecommunications churn. Got it. Logistic regulations and all the stuff. Okay. So so actually in this course you have learned the telecommunication only, yeah, but in the deep level. Means, for example, whatever technologies are going in the market, legacy to 5G, completely technology, you have learned it, yeah, and also you can be able to use your data science experience as well in this industry, including the SIP means protocol testing, not like the SIP IMS, means with the telecommunication technology using with the data science as well. Actually, most of the company will hire the data science engineer, including the VoIP engineer and the IMS server node as well. So you have I have also done my certification in AWS, and I have also worked in Hadoop. While I was in Sinol Private Limited, because here I was currently I am running in loss. This is also the good thing. Because in data no. Means if you have the data science experience and the AWS certification you have also, so you have means you will get the good opportunity in any companies. Sir, what the problem is that previous time my salary was 8 lakhs per annum. Okay. Currently I am working in currently I am in salary doesn't matter, boss. Means if you have enough skill, right? So there is no matter you have if you have if you are getting a 10 lakh or 10 lakh plus or 20 lakh plus, it doesn't matter. If you have a skills, then you have experience 3 or 4 years, so the anyone can company will hire you. Only the 2 companies will not. Yes, sir. So Sorry, your voice is not audible. No, hello, actually, sir. Am I audible? Yes, you're audible. Sir, what the problem is after joining DT? Okay, my salary is very low. I know very well. So my main concern was, sir, that I have worked in AWS also in server, in NPV server. Okay, the cloud gateway, IPv3, IPv4 in cloud gateway, in AWS, in Google Cloud also. I have worked in the company. So knowledge of server, I'm audible, guys. Yes. Hello. Oh yeah. Okay. I think there is some issue with. So yeah.
Okay, so Miss, okay, so Taraji will come back maybe. Okay, so any other question you have apart from means anything you have in the course or anything? And also one more thing, I will edit you in this course as well. Means this course will be. सर मैं Sorry. मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार डिटेल्स बता दीजिए कोर्स में हम हाँ लोग क्या हाँ yes सीखेंगे और yes क्या कैसे yes yes सीखेंगे वगैरह वगैरह. yes 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 yes. Okay. I will share my screen now. So it's visible to you all, right? Yeah, okay. It's visible to all of you. The screen is visible, right? Yes, sir, it's visible. Okay. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Okay. So means what contents we need to be covered in this? First SIP, which is the VoIP. SDP. This is a description of the protocol. Diameter protocol. IMS. These are the manual testing scenarios, no? And as well as we will try to learn the deployment as well. Deployment of IMS node. And third one, actually, this is the complementary from my side. I think it's not mentioned in your content, maybe automation testing, but this was, but the automation will, I will just let you know on that guy that will clear the mock interview, you know. Actually, the after completing this course, the mock will be conducted. So after mock, I will just try to learn with the automation as well, the testing as well. So manual, deployment, and automation, all three things you need to be covered in this course. And also how much time it will take in SIP and IMS. I think maybe 3 months, including these things, automation, deployment as well, and whatever. And after that, Sir, I have a quiz. Yeah. Yes, can you talk in Hindi? I think English में थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में. Okay. Okay, no issue. Yeah, Charles, I think you are asking something. Oh, thank you. Are you going to keep talking in English or Hindi so I know to drop? Because you started something very interesting. I wanted to ask you also what tools are you going to use to present, Okay. let's say, troubleshooting with the Wireshark or Yes, right. Wireshark, PuTTY, Mobile Extreme, Access Shell, Zira, and Zippy as well. And apart from that, just a second, for the automation, actually, I need to edit. Python, iCharm only, means how to create the keywords and scripting for the robot framework. And yeah, only these things we will cover in this. Are these tools free? Yeah. Free tools or? No. Only this one is free. Yeah. Only this things is free. Apart from this, and also this one is also free. But apart from that, you will get the license. Are you going to use some log files from VoLTE? All tools will be all tools. Vikas. Add Lozel and QXDM as well. Okay. For VoLTE logs. QXDM and Lozel. For Unisoc. Unisoc. SOC. UNISOC. Okay. So this tools you have to cover in this scenario as well. So any other question, HR user? If required, open our brochure where mentioned all the module detail so that everyone can go
Understand. If required, we'll send again an updated one. Yeah, send please. Sir, kindly Via if you can share via the brochure, WhatsApp. that will be very helpful for us. Yeah, definitely, HR. Kindly if you can share the brochure, that will be very helpful. Sorry. All of us are from different. Sir, if you can kindly share the brochure, so then it will be very helpful for us because we are all from different domains. So No. Means means actually means all are coming from the different domain. Yeah, means yes, some are coming from the telecom. Actually, telecom domain is a different. Yeah, so not like that means you are from the means different domain. Because So because I shared in your WhatsApp. yeah, got it. So this is the complete course which I will have to cover SIP and IMS. And if you need to be added the AWS as well, so I think we can be also able to cover this AWS as well. And the second point, okay, about this. Okay, so means what is the contents we have to cover in the SIP? Yeah. So what is the SIP and what is the architecture of SIP? Network elements means we can see the servers. Yeah, and server types, what is the transaction dialog, means these are the topics are coming from the SIP protocols. Codec, I think you all aware about that codecs and which request we have to initiate it and what response we have to get it instead of the request, and headers as well, and all the responses we need to be covered in the SIP. And these are the call flows which are covered from our side, and whatever tools we have to use in the Wireshark, CP tools and PuTTY tools as well, we have to mention in the Sketchpad as well. And the contents of the IMS side, IMS is completely based on the node, yeah, IP multimedia. So what is the architecture of IMS? And this is the functionality of IMS. What is the reference points in the IMS? Yeah, this is the IBCF, so we can be covered as well. And this is the proxy actually. Yeah, actually in the first things we have covered, network element. So this is the IMS, we can say the IMS element. Yeah, so this is the IMS element, and these are the parts of this IMS element. So all the complete IMS node will be covered, and this is also the IMS node. So all the nodes will be covered, and after the testing, we will complete this portion as well. Deployment. Actually, most of the company will hire the candidates with the testing and deployment as well. So we will cover deployment as well in this course as well. So deployment will be completed in the OpenStack and the cloud base. So all two things you have to cover, OpenStack and cloud as well. These this parts is also are in the IMS as well. And the flows means what flow we have to cover in the IMS side. So these are the call flows which we need to be covered, and some we need to be added in this. Actually, this is the IMS to IMS means the 4G to 4G call, conferencing, SRBCC, like that. And we need to be added two more call flows like waiting call flows, forwarding call flow, and SMS call flow as well. So we have to add it in this as well. And what tools we have to use for this call tools? Actually, I have already mentioned the QXTM launchers and Wireshark as well. And this is the command. So commands means Linux command only. Yeah. So Linux is the mandatory to execute any scenarios in the VoIP and IMS. So Linux we have to cover in this. And then after that, we have to prepare your CV and the automation as well. But the automation things will be complete after your mock. Yeah. If you are in good in manual testing, so then we can be move in the automation as well. And after the automation, we have to go with your interview preparation, project discussion, and etc. So all these things will be covered from our side, including resume, day-to-day activity, what you need to be present in the interview. Everything will be covered in this. And this is the module from the AWS side, means whatever things we have to cover as per the telecom industry, means what is the AWS and what instance we need to be create in the AWS. Actually, we have will work on the EC2 instance only. So AWS we have to cover. If anyone is interested, so you can be take the AWS as well.
And this is the management IP, means what things we have to cover AWS. Actually, I think AWS person may be the different. We have a separate Yes, sir. Yes, Yeah. sir. I can relate, sir. domainer. I can relate. We have IAM is giving the users access, and if you do it elastic, okay, when Yeah, where yeah, you have to Elastic gateways too. and you have to create instances or all that stuff. Right, Elastic too. Yeah. Personally, sir, I was into the project into AWS personally because Okay. for the 1 year I was working in the project on AWS. So And it is the cloud as good. well. Actually, the SIP IMS is the good things for you as well, because you have completed your many things which is required in the industry. Yeah. So Yes, you sir, have because to I need just. a guide. I want to proceed. How can I get my career into a more better domain? So, if you can help me out, sir, I want to enroll. That's why. This is the good opportunity with you. Now all technologies are coming in the market. Yeah, 5G, 6G means whatever generation will be coming in the future, right? So in this the IMS will be available. So SIP and IMS will be available in this now. So as per the growth and as per the career as well, we can be able to say the SIP and IMS will be continuously flow in the market. Technology will be changed, everything will be changed, but the SIP and IMS will be the fix, because the VoIP are I think so from the 90s, but means from the 90s the SIP is continuously going on. So SIP and IMS means there is means we can't say it means there is no future. Yeah, you will get the all these things from the IMS side only. So EC2. So these things we have to cover from the AWS side as well. So EC2 instance, and what things we have to cover in the AWS modules. So this is the contents we have to cover in SIP, IMS, deployment, and automation. And all your queries like resume or what project you have to present in your interview. So all these things will be covered from that side as. What out of these mentioned will be covered tomorrow? Yes, right. Yes, technical session will be started by tomorrow 8 p.m. to 10 p.m. fully 2-hour technical session. Vikas, yeah, just give a brief introduction why IMS or why SIP comes into telecom picture, because this is previously working as a name as a VoIP, so that he can get better understanding about the technology. By tomorrow, that's on same page for better understanding. So give general yeah. introduction about the things. Okay, most of the candidate not heard SIP and the VoIP because they are making reports colorful journey and telecom. Even Right. they don't know about the call flow. In call flow, SIP is included. Okay, just keep basic 30 minutes introduction, not Yeah. go on any call flow and all. Yeah. Okay. So देखिए. So means okay, means currently we are using the meeting, right? Microsoft meetings. Yeah. Currently we are using the Microsoft. So means my voice are clear to all of you and your voice is clear to me as well. So that means the media is flow, audio and video. If I will try to switch in the video, so I can be moving the video. So this is the VoIP. Skype calling, you can be use the VoIP. Legacy side, everything will be in the VoIP. So for the VoIP, what protocol we have to use to handle the VoIP call? This is the SIP. SIP कुछ अलग नहीं है, राइट? SIP क्या है? SIP एक प्रोटोकॉल है जो कि VoIP कॉल्स को हैंडल कर रहा है. SIP के अंदर क्या चाह रहा है कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे आपको कॉल लगाना है. देखो यहाँ पर क्या सब कॉलिंग, मैसेजिंग, रजिस्ट्रेशन सब यही केवल बात होती है, ठीक है? कॉल लगाना है, ये नहीं कि देखो कॉल फ्लो एक वर्ड लग गया कि कितना डिफरेंट है कॉल फ्लो. अब आपके दिमाग में थिंकिंग कि कॉल फ्लो कैसे होगा? कॉल फ्लो कुछ नहीं होता है. आपने मुझे फोन लगाया, ठीक है, मैंने आपको फोन मतलब मैंने फोन रिसीव कर लिया, राइट? तो हमारा बातें हो गया, उसके बाद फोन हमने टर्मिनेट कर दिया, राइट? हमने फोन काट दिया, ठीक है? इतना जो सेशन चला है ना, आपने मुझे फोन लगाया, मैंने फोन रिसीव किया, उसके बाद
हमारा कम्युनिकेशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, हमारे बीच में मीडिया चला, ठीक है, उसके बाद हमने बातें किया, फोन काट दिया। ये थिंकिंग है क्योंकि हम ये लोग ये डेली बेस पे यूज करते हैं। तो सर यहाँ पर भी सेम चीज करना है, कुछ अलग नहीं करना है। Just because you can ask question from audience, what is required to call A person to B person. I need answer from everyone what they are expecting to set up a call, because all are in telecom background. इन्हीं से क्वेश्चन करो आप, इन्हीं की चीजों को राइट डाउन करो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड। नहीं, अब अभी मैं कह रहा मे बी सिर्फ एक Yes, yes. एक थोड़ा सा इसके लिए समझा दूं कि है क्या, मतलब अगर इस इनका वर्ड से थोड़ा डर लग रहा हो, इनका थोड़ा सा इनका अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद करते हैं ना, चलेगा, ठीक है। Anyone can just let me know, means A person will try to call to B, so what things will have to flow in this? Anyone? EUTRAN IMS core. Okay, okay, means you will try to call to me, okay, so what things will have to means available inside this, what servers and what flow and what flow will be available between you and me? After you attach, you need nodes from IMS. Okay. Proxy, interrogating and serving CSCF. You are going actually means you are going good in IMS, I think so, because the interrogating and the serving all are coming the IMS side. Yeah, but no issue on that. Yeah, so means A party will first try to call with that, means which proxy will hit the call? First which proxy? Means server, you can say server. A proxy server. Yeah. In proxy CSCF. Yeah, right. Then proxy interrogating CSCF. Then interrogating and serving. Yes, going good. Then it will contact. Then from the server. Which server? Okay, means after the interrogating, then we'll move to the another server. Yeah. Serving CSCF. Okay, serving CSCF. Okay. Then you have their HSS, and there will be also in this IMS application server for messaging. Okay, application server. Then HSS. Okay, means which HHS from for the A party address, means for the A party HHS or the B party HHS? Okay, I have just mentioned it. HHS then. These are major. Okay, got it. Okay. Anyone can add anything? I think means most of the people are don't aware about the proxy interrogating and serving and application as well. Yeah. So means anything you have in your mind, means how to get the call from A to B. Anything you have in your mind. This is from the HR Jose. So anything anyone can ask, means let me know what is the flow between A to B. Not in the SIP and IMS, just means whatever you have learned in your telecom life ना, जो भी आपने सीखा है टेलीकॉम में, आप कॉल कैसे लगाते हो, ये सब देखो, ये अभी आप माइंड में मत रखो, ये वाला मेरे को यहाँ से मिला, ठीक है, बट आपके माइंड में क्या चल रहा है, जैसे मेरा कॉल लगा तो मेरे सर फर्स्ट तो कोई भी है, जैसे मैंने आपको कॉल लगाया, इफ आई एम कॉलिंग यू सर, डायलर ए इज कॉलिंग टू डायलर बी, ठीक है, फिर देन एमएसपी बिकॉज सर्वर 1 रिसीव फ्रॉम सर्वर बी, फिर एसआरआई, फिर एमएनपी सर्वर को हम लोग एक्सएलआर केस में हम लोग कॉल प्रो में फिर उसको रिसीव करते हैं नॉर्मली, बिकॉज
gateway में सबसे because every time in gateway we have to always see that IPv1 or IPv2 has a similarity. So in response, MST2 then returns with MSRS. Okay, so means actually you There have is a voice used part between the two MSCS, MSCS1 and MSCS2. That we have to establish the voice part. MSC. Yes, sir. Means a bit MSC server. Okay. Yes, sir. So means how to get the Because call? multiple server, because not that is I want to mean that mobile to mobile call flow. Hello. Yeah. Okay then. Okay. So anyone can मीन्स देखो अभी टेलीकॉम से रिलेटेड ही बात करो ना, जो आपके माइंड में आ रहा है। काफी सारे बंदे हैं, अमित है, विमल है। सर पहले जाइए नियर बाई बीटीएस पे। ठीक है, बीटीएस गया। ओके, आपकी जो एमएमई और ये जो होते हैं अपने उस पे जाएगी, वो वहां से कॉल जाएगा आपका, ये आपके एचएचएस में जाएगा, वहां पे कॉल चेक होती है, रजिस्टर है नहीं, नंबर वगैरह जो भी है। ठीक है, मैं उसको ऑथेंटिकेट लेकर रहा हूँ। ठीक है, वो बीएससी में जाएगी, बीएससी टू एमएससी ऐसे कॉल फॉलो होता है सर। अभी एमएमई अगर बात कर रहे हैं तो बीएससी में नहीं जाएगा ना, क्योंकि एमएमई 4G का है। यस सर। हाँ, तो फिर अब यहाँ से कहाँ जाएगी? एस गेटवे जाएगी और पी गेटवे जाएगी सर। एस गेटवे पी गेटवे चले जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये है कि एक जो आपके माइंड में कॉल फ्लो है ना, ठीक है, जब अभी आपने कुछ सर्वर्स के नाम बताए मुझे, एमएमई, एचएचएस, एस गेटवे, पी गेटवे, दीज ऑल आर द सर्वर्स, दीज ऑल आर द प्रॉक्सीज। ठीक है, तो सिर्फ यही वर्ड हमें वहां पे यूज करने हैं। मींस नॉट लाइक द एमएमई, एक्चुअली वी हैव टू यूज द एससीएससीएफ। या सो वर्ड वही रहेंगे, उनका वर्किंग सेम रहेगा, सिर्फ उनके वर्ड्स अलग हो जाएंगे। मतलब जैसे प्रॉक्सी का नाम मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एमएमई है, ठीक है, ये मेरी प्रॉक्सी है, यहाँ पे मेरी कॉल पहुंच रहा है, यहाँ पे मेरा कॉल ट्रिगर हो रहा है, तो वहां पर मैं उस प्रॉक्सी का नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा बस, बट उसका जो वर्किंग है वो सेम रहेगा। बस सर यही है कि हम इसको एमएमई के नाम से जानते हैं, आप इसको प्रॉक्सी जानते हैं। यस 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 यस। तो इसलिए देखो, अभी अगर आपके माइंड में चल, जैसे अभी मैं देखो कॉल में मैं सुन रहा था जब भी अब स्टार्ट हुआ था कि हम एकदम डिफरेंट फील्ड से हैं, कोई आई थिंक रिपोर्ट से है, कोई कोऑर्डिनेशन में है। देखो, आप कोऑर्डिनेशन में हो या फिर आप कहीं भी हो, आप जब अगर रिपोर्ट भी बनाते हो या आप कोऑर्डिनेशन करते हो, तो आप काफी चीजों को ना ट्रबल शूट करते हो। जैसे रिपोर्ट बनाने जाते हो तो वहां पर आपको काफी सारे पैरामीटर्स आते हैं, जैसे कि वोल्टी का आपको अगर प्लॉट लगाने तो उसमें AMR करके कोडेक आता है, तो वो भी आपका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, वो उसके साथ साथ आपको आर्किटेक्चर भी मालूम पड़ता है ना, तो वही सेम चीज आपको यहाँ यूज करना है, बट यहाँ पर आपको वो सिग्नलिंग और मीडिया के थ्रू जाना है कि कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है, कौन सा रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, देखो ये जो है ना सिप IMS, वो होता है इजी टू स्विच। अगर आपको आईटी में स्विच होना है तो वो इजी टू स्विच चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप वही चीज, वही वर्ड यूज कर रहे हो जो आप अभी तक काम करते आए हो, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे उसका थोड़ा नाम बस डिफरेंट हो जाता है, बट उसका जो वर्किंग कल्चर है सेम रहता है। इसलिए सिप IMS को बोला जाता है इजी टू स्विच। जो अगर आपको जल्दी स्विच करना है तो सबसे बेस्ट तरीका सिप IMS होता है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें निकलती है। अगर आप कभी ट्राई करोगे ना तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकलती है वो सिप एंड IMS ही निकलता है, और किसी उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत रेयर निकलता है। सॉरी। तो आर्किटेक्चर किसी को पता है क्या? 4G का ही मैं बात कर रहा हूं। ये तो आपका चलो कॉल का हो गया कि आपने काफी चीजें बताई हैं, और सिमिलर ही रहने वाला है आगे जाके भी, सिर्फ ये रहेगा कि वहां पे हम वर्ड्स के सिर्फ नाम चेंज करेंगे, बाकी सेम वर्किंग कल्चर उसका रहेगा। तो आपको मोस्टली मतलब मैक्सिमम चीजें हैं जो आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी या हो रही हैं धीरे धीरे। किसी को आर्किटेक्चर पता है क्या? IMS का आर्किटेक्चर? नहीं, आप मुझे 4G का ही बता दीजिए, नॉट ओनली IMS। आप 4G मतलब LT का बता दीजिए। थोड़ा बहुत पता है सॉरी सब, थोड़ा बहुत पता है इसमें।
EU ट्रान आता है, EPC सर्वर PDN, इवॉल्व पैकेट को यूट्रन हो गया, उसके बाद क्या आता है? EPC ठीक है, तो इवॉल्व ईपीसी में पैकेट कौन को कौन ईपीसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? एमएमई आता है, साइज HS आता है, P गेटवे आता है, सर्विस गेटवे आता है। ठीक है, HSS और एचएचएस ईपीसी में नहीं आता है सर। उसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? PDN आता है क्या? हाँ, पीडीएन आता है आपका। पी गेटवे से जो रिक्वेस्ट निकलती है ना, पीडीएन मतलब इंटरनेट है, तो वो रहेगा, वो अपना एसडीआई इंटरफेस पे। ठीक है, हाँ ये भी रहेगा। एचएलआर वीएलआर रहेगा। एचएलआर वीएलआर आपका ना उसमें आता है लेगेसी साइड में, ये एलटी में नहीं आएगा। जो आप बता रहे हो ना एचएलआर वीएलआर, वो आपका 2G 3G में है, होम लोकेशन और अपना विजिटर लोकेशन। तो आप यहाँ पर उसको एचएचएस वर्ड से नाम से आप अपना वर्ड यूज कर रहे हो ना, एचएचएस, तो वही है। हाँ, तो वही है। In last picture you put proxy under the MME. MME is also the proxy. S-gateway is also the proxy. Okay. Yeah, means and EUTRAN is also the proxy because we have to test it in the lab. Yeah. So means we can't able to create any EUTRAN in the lab. Yeah. So we will use the proxy instead of the EUTRAN or MME or gateway or S gateway. So we have to use the server on server. Okay. Any other? Do you want to add something? I will start from my side. Yeah. Yeah, Rahul. UE to eNode B, eNode B to MME, MME to HSS, GMS के serving gateway, this serving gateway to PGW and IMS PCRF. Okay, got it. P gateway to PCRF, and then these things will be coming inside this. After this IMS. So देखो यही फ्लो रहेगा आपका, जो अभी बताया है, किसने बताया? राहुल ने बताया ना, तो यही फ्लो आपका रहेगा। अब आपको यार टेस्टिंग में सीखना क्या, जब आप वो सोचोगे कि जब हमको ये सब पता है तो हम यहाँ क्यों आए हैं। अब आप यहाँ क्यों आए हैं, उसका रीजन ये है कि अब आपको IMS के अंदर में भी सेम चीज रहता है, ऐसी जैसे यहाँ पे अपना इनोड भी है, वहाँ पे आपका PCSCF रहेगा, MME है, वहाँ आपका SCSCF रहेगा, मतलब प्रॉक्सीज के नाम है ये। ठीक है, तो उनके अंदर मैसेज क्या जा रहा है, इनके अंदर मैसेज क्या जा रहा है। अब ये तो आपने क्या अभी मुझे सिर्फ नोड के नाम बताया, उन प्रॉक्सीज के नाम बताया, उनका कनेक्टिविटी बताया। अब यहाँ हमको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज द रिक्वेस्ट इन बिटवीन P गेटवे एंड PCRF, इनके बीच में क्या जा रहा है। जो हमको मैसेज देखने हैं, जो हम टेस्टिंग करते हैं एक्चुअल में, वो ये होता है कि इनके बीच में क्या जा रहा है, व्हाट इज द रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज द मैसेजेस फ्लो इन IMS और SIP में। सारा यही पढ़ना है कि इनके अंदर क्या जा रहा है। देखो प्रॉक्सीज के नाम आपको ऑलमोस्ट पता ही हैं, जो IMS के हैं वो अपने टेक्निकल चीजों में, वो अपने हमारे कंटेंट्स में अवेलेबल है। ये आपका LT का है, LT भी पिक्चर में आता है। ठीक है, बेसिक LT पिक्चर में आता है, जितना आपको पता है ना उतना आता है, बट अपने को अब ये जानना होगा इसके अंदर क्या जाता है। तो यही है हम जो टेस्टिंग करने जा रहे हैं ना। टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है, टेस्टिंग अगर ओवर से होता, अगर मतलब ऊपर से टेस्टिंग होता तो कभी हम लोग करते ही नहीं, राइट। जो डेवलपर टीम एप्लीकेशन बनाती है वही टेस्ट कर लेती, मगर क्यूए को वो क्यों रखते हैं? क्यूए को इसलिए रखते हैं कि जो भी फंक्शनल हमने चेंजेस किए हैं इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, तो वो टेस्टिंग करने के लिए हमको रखा जाता है। और जहां पर रिक्वायरमेंट आता है SIP एंड IMS का, अगर आपको ये आता है तो देन यू कैन डू एनी टेस्टिंग। ठीक है, और कोई है इसमें? जैसे राजेंद्र है, बिमल है, योगेंद्र है, सोनांचल है,
और किसी का कोई एडिशन है, कोई एड ऑन करना चाहता है इसमें? नो सर। ओके, ठीक है। देखो अभी आपका कंटेंट अभी हम देखें इसमें, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये आपको मैं इसमें सिलेबस में पूरा कंप्लीट में आपको बताया ही था, ठीक है। ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अब जैसे अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग पढ़ाई, मतलब हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपको आइडिया है कि हम प्रोटोकॉल्स के लिए हैं। तो विच प्रोटोकॉल? सिप एंड IMS प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रोटोकॉल्स के लिए यहाँ पे हम अवेलेबल है। ये आपका, मैं अगर ये बात करता हूँ तो 2G में भी काम आता है, 3G में भी काम आता है, एंड देन 4G और 5G। अब आप बोलोगे जब इस सब में काम आता है तो ऐसा क्या हुआ है कि यहीं से हमारा सब कुछ हो जाता, तो हम यहाँ क्यों अपग्रेड हुए? देखो ये जो लेगेसी में हम लोग वाइप यूज करते हैं वो पॉइंट कोड पे चलता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सारा IP बेस है, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योर नेटवर्क में आता है, क्योंकि हम लोग पूरा मैक्सिमम तो क्लाउड पे ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा सिक्योर्ड कनेक्शन देते हैं IP के। यहाँ हम पॉइंट कोड पे काम करते थे, लेकिन यूज हमारा यहाँ पर भी यही होता था, वाइप। IMS क्या है? IMS आपने LT सुना ही है, तो LT आपको पता है 4G को बोलते हैं। इसको अपग्रेड किया इन्होंने, बना दिया वॉइस ओवर LT, मतलब IMS। सिर्फ इतना फर्क हुआ है। वॉइप आपका यहाँ पर भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता था। और What is IMS the क्या है? point code? What do you mean by point code for 2G and 3G? Point code means means how to mention the IP like this. Yeah, this is the server IP, and point code means this one. Actually, this one is the country code. Okay. This LAN. MCC. Yes, MCC. Right. Okay. Right. MNC. Means, LAN country network and state code. Yeah, like that. A mobile network. Yeah. Yes. So these things we have to cover in the complete SIP and IMS. Okay, SIP and IMS, and including the SIP SDP, we'll have to cover. All these things are mentioned in your content as well. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। और टेक्निकल जो स्टार्ट कल में आपको ये स्टार्टिंग में ये बताएंगे भी कि एक्चुअली में ये सिप है क्या है, ठीक है। और कोई भी चीज देखो यहाँ पे रटने वाला होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें ऐसा कोई आपको टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको प्रैक्टिकल से रिलेट ना किया जाए। तो थ्योरी जो होता है ना, काफी बंदे सोचते हैं कि थ्योरी है तो उसको रटना पड़ेगा, रटने वाला सिनेरियो नहीं है। जैसे आपको अभी मैंने थ्योरी बताया, नेक्स्ट डे आपको उसका प्रैक्टिकली दिखा दिया जाएगा, जिसका टूल हम लोग वायाक्षार्क यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे हमने जैसे कोई भी कॉल फ्लो हम यूज किया, उसको वायाक्षार्क में एनालाइज किया, तो वो आपका वन पोर्शन क्लोज। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स वायाक्षार्क से होते हैं। थ्योरी पे वो जब जाते हैं जब उनको डाउट होता है आपके ऊपर। डाउट मीन्स बोले तो जब आप हेजिटेट होते हो ना, क्योंकि जैसे आपने वो दिखाया 4 5 ही है और आप हेजिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो, तो वो थ्योरी में जाते हैं। नहीं तो थ्योरी में कोई भी प्रैक्टिकल गाइज नहीं जाता है, सब यहाँ जाते हैं प्रैक्टिकल में। और ये चीज आप अभी जिनको मैक्सिमम इंटरव्यू जो आप 10+ और 5+ है ना बंदे, उनको आइडिया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो प्रैक्टिकली पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछता है। थ्योरी वो उतना ही पूछेगा जितना उसको रिक्वायर्ड होगा। ओनली प्रैक्टिकल सेशन दे हैव टू आस्क। ट्रबल शूटिंग, इसके अंदर क्या जा रहा है, इस मैसेज में क्या है, इस मैसेज में क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके चलेंगे। तो वही चीज यहाँ पर प्रिपेयर होगा। और किसी का कुछ है डाउट सिलेबस को लेकर के या टॉपिक्स को लेकर के कि क्या क्या कवर होना है और एक्स्ट्रा एनीथिंग? सर ये क्लाउड का यूज किस लिए होता है इसमें? आप जीमेल यूज करते हो? हाँ जी, डेटा उसको अपलोड या मतलब सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए होता है। इसे जीमेल क्या है? ड्राइव दे दी जाती है हमको। जीमेल ड्राइव, ईमेल इज पब्लिक क्लाउड, राइट। देखो आप अभी जो भी यूज करते हो ना, जीमेल हो गया,
force.com हो गया, AWS हो गया, गूगल का क्लाउड हो गया, यहाँ पर क्या आपका डेटा सिक्योर्ड है। सभी के अपने अपने क्लाउड्स हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे प्राइवेट क्लाउड यूज करती हैं कि उनका डेटा कहीं आगे नहीं जा सकता। गूगल अपना गूगल है, ठीक है, गूगल में हम लोग एक स्पेस बना के रखते हैं कि ये अपना पब्लिकली है, इसको आप यूज कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं क्लाउड को। और क्लाउड के लिए ना सेपरेट टीचर है, क्लाउड के लिए सेपरेट टीचर है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो ना AWS के लिए, तो वो आपको पूरा कंप्लीटली गाइड करेंगे क्लाउड को लेकर के कि क्या अपने को यूज में आता है। देखो हम लोग आपको प्रोवाइड जो करते हैं ना, देखो थ्योरी पोर्शन तो एक मैंडेटरी है, ठीक है, ये तो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मेन फोकस जो हमारा होता है ना वो आपके इंटरव्यू के ऊपर होता है, मतलब आपका इंटरव्यू निकलवाना। देखो आप क्यों आए यहाँ पे, सिर्फ केवल जॉब के प्रोस्पेक्ट से ना कि आप, अगर ये मैं रियल बताऊं ना, आप में से कोई भी नहीं है जो सिर्फ इसलिए आया हो कि नहीं मुझे केवल पढ़ना है, जॉब नहीं करनी है, राइट। सभी लोग आए केवल जॉब के उससे आए, राइट, कि मुझे जॉब स्विच करना है। तो जॉब में आपको भी पता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें होती है प्रैक्टिकल, ठीक है, ये एग्री हो ना इस चीज पे। थ्योरी कितना पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल मैक्सिमम पूछा जाता है, ये चीज आपको भी पता है। चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपका इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं पे आके एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थ्योरी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। आपने बीटेक में भी थ्योरी पढ़ा या ग्रेजुएशन में थ्योरी पढ़ा, ठीक है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है। इंटरव्यू में जो अगर आप एग्जाम भी देने बैठते हो तो क्या एकदम बिल्कुल ऐसा आता है जो आपने मतलब जैसे उसमें लिखा है व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस थिंग्स, नहीं मिलेगा ना, बहुत ही रेयर क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन क्या करेगा, घुमा के देगा। तो सेम चीज उसको यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन करता है कि आप क्या करते हो, अच्छा ये वाली प्रॉक्सी पे काम करते हो, अच्छा तो इस प्रॉक्सी में क्या होता है, मतलब वो आपसे उसमें घुसेगा। तो हमारा जो मेन फोकस होता है आपके प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन क्लियर है तो थ्योरी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, क्योंकि थ्योरी तो क्या है कि डेली बेस पे हम लोग पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होना है। प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे अभी जो डेली बेस पे कवर करेंगे वो वायक शार्क्स है। वायक शार्क में क्या होते हैं, लॉक्स आप जिसे बोलते हो ना, अपने अपने खुद के अभी कल्चर में यूज करते हो ना लॉक्स, तो ये वही है, ठीक है। यहाँ पर उसका जो डोमेन क्लेचर होता है वो पी कैप के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है, .pcap। तो ये लॉक्स है, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे अभी आप लॉक्स कहाँ ओपन करते हो, आपके कुछ टूल्स होंगे ना, RF में टूल्स होते होंगे, तो कौन कौन से टूल होते हैं RF में? जीनेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉक्स ओपन करते हो, यहाँ से आप एनालाइज जो कि हमारा क्या इशू, कितने पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजों को देखते हो लॉक्स में जाकर के। और यहाँ पर क्या जो हमारा नोमेनक्लेचर होगा वो .pcap रहेगा, और ये जब आपका ओपन होता है वो अपना सिर्फ वायक शार्क पे होता है, सिर्फ यहाँ ओपन होगा वायक शार्क पे। तो ये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप डेली बेस पे इसको एनालाइज कर सकते हो। और इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं आपके मोस्टली यहीं से निकलता है, 70% आपका इंटरव्यू यहीं से निकलता है। थ्योरी आपका मान लो 30% है, 30% थ्योरी चलता है, या 70% is what you have been asked at the interviews, or and 30% theory. Is it? I understood correctly? No, not 100% theory. No. Means, I'm not understanding completely what you are saying. No, wait. Means if you will apply it anywhere, so means the interviewer will ask the one question: how many experience you have? You have told 5 to 6 years, yeah. So the interviewer capture in his mind means he's working last from the 5 to 6 years. So they will ask from the practical sides only, not from the theory side, because the interviewer knows in the 5 to 6 years the theory portion has been cleared. So the practical portion they will ask the fluently. So almost the practical portion will ask from your side. If the experience is less than 5 years, so it can be the 30-40% from the theory side and from the practical sides. If you have the more than 10 year or 11 year or 12 year, so definitely they will ask the practical sides only, not from the theory sides. So the practical and the theory will be the parallelly work, not we can say the like this. So it depends on the interviewer. And your luck as Sir, well. I'm just 25 and this is my just beginning of the career. So what is your suggestion? What should I do?
First, as per you have data to science decide and your all that. goal. First, you have to decide your goal. Sir, my goal is to that I can get foreign opportunities and on-site projects. That is my main target. That's why I'm gone into the telecom industry. Okay, means you are going to on-site. Yes. You're okay. So okay, देखो, SIP and IMS and any other protocol testing, and as well as you have the multiple certification you have, then you can able to easily apply it, because the most of the companies will hire from the IMS side, means Balti sides only, in the Okay. in the UK and Japan and Canada as well. So all three countries, they have completely invited to that people who has the knowledge in the protocol, and which protocol they have hired. Most of the things, most of the countries and most of the companies will hire from the VoIP engineer or the Volti engineer only. The biggest problem of me is, sir, because because I have 2 months in this domain, so maximum of the AI architecture, all the stuff is I'm not aware of. Wait. You have the experience in 2 months in RF side, and as per your earlier wording, you have spent 2 years in different domain. Yeah. Yes, sir. In data science So and the cloud and all the stuff. yes, right. So miss, you have total How the to deployment 2.2 in cloud, years. I know that also. So that's why you have total 2+ years. Hello. You understood my point, no? Means you don't just count your 2 month experience. You have total 2+ year of experience. It doesn't matter where you have. Means आपका Yeah, experience था नहीं just था, wait. doesn't matter. Vikas, Mm-hmm. Turja, by tomorrow you can call me. We'll discuss more about your previous experience. Okay, Sure. and for sure we'll guide where you have to go or not. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Thank you, Vikas, sir. carry Thank on. Carry on. Yeah. Okay. ओके, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ना काफी सारे बंदे हैं जिनका कोई भी क्वेश्चंस मतलब वो नहीं है। से योगेंद्र, आपका कुछ है टेक्निकली कि आपको कुछ पूछना है? ठीक है, क्या कंटेंट्स के बारे में या कुछ भी? सर ये जो पाइचाम आईडीई है ये किस लिए यूज हो रहा है? पाइथन के लिए क्या? देखो पाइचाम नहीं, ये पाइथन है। ठीक है, पाइथन का ही वर्जन है पाइचाम। देखो मैंने ऑटोमेशन यहाँ पे इसलिए एडिट किया है, आई थिंक आपके कंटेंट में नहीं है। मैंने ये बोला है कि अगर आपका मॉक अच्छा जाता है, मॉक का मतलब होता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आप अगर जैसे मान लो, देखो मॉक या तो मैं लूंगा या फिर मेरी कोई टीम लेगी, तो आपको जितना पढ़ाया गया है वो आपसे पूछेंगे। अगर वो आपका अच्छा जाता है तो ऑटोमेशन मेरी तरफ से एड ऑन रहेगा। और ऑटोमेशन को हमको जब हम कोई ऑटोमेट करने जाते हैं तो हमको स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे पाइथन यूज कर रहे हैं। Yeah, my question is, after completed your this course, in which domain I can apply? Means in testing, in development, in operation. Okay. On which domain Got I it. can? Got it. Testing And you what's the can duration apply. of this course? Testing you can apply it. Solution architect you can apply it. Deployment you can apply it. As a QA you can apply it. SME you can apply it. And if you if you have any means some basic knowledge in the Docker and Kubernetes, so you can apply the DevOps as well. And operation as well. Operation. Yeah. Yes. So so now this testing and QA, I think both are same, or these are different? Quality assurance and testing, both are same. QA means, yes, means both are same. Means actually I have mentioned the keyword only testing. So means whatever things are available in the testing side, na? Okay. So what's the duration of this course? We have weekly classes, or we will go daily classes for daily classes? Weekly, Saturday and Sunday. Saturday, Sunday. And what's the duration of class? I think 2 years. Means 1.5 to 2 years. Means 2 months. Sorry, 2 hours. 2 hours. It's a weekend, 2 hours in Saturday, 2 hours in Sunday. It will take around 3 months. If you go with complete SIP IMS along with AWS, it will take around 4 months.
Okay, it's total 4 months. So duration Yes. during this course, you will provide any you can reference for interview calls or suggestion. Yes, definitely will provide. Just a minute, guys. We'll share my screen. Deepak, you can share screen. Vikas, stop your screen. Yeah. Yeah, stop it. Excuse me. Can I ask something? Yeah, please. If you can just go back to this slide where you were showing the tools that you are going to use, can you just tell a couple of words for what this tool any is doing? Just short as possible. Okay. Yes, sir. For Wireshark we know, for QXDM. I am sharing one tool. Just a minute. Meaning, if you are analyzing VoLTE, what is the best, most useful tool that you use? Wireshark. My screen is visible? Yeah. Yeah, this is Logel tool, where we can capture IMS VoLTE log. I think you are looking. This is IMS log. Visual? I mean, Logel, where is it logging the data? On air interface or on in core, in IMS? Or? It's a setup based, license based tool. I can get log from UE end. Okay, from air interface, yeah? Yeah. Okay. I can get connect to modem or UE and get to collect the log. Okay, super. Yeah. There was this PuTTY and something else you mentioned. Yes, right. PuTTY we have to use for the execution purpose. For execution? For execution, and you need to check your live traces as well. Means you can be check out there. So means PuTTY as well. PuTTY mainly used for the execution and the logs check. Means if you need to be check the live scenario, so then you can use the PuTTY as well. Means what traffic are going and coming, so you can be able to check in the PuTTY as well. PuTTY is the terminal. Okay, we have to install the OS, means Linux. Yeah, so in the Linux, we have to means PuTTY is just like a terminal only. So we have to install the Linux platform inside the PuTTY, and then we have to execute any scenario. So we can be able to see all the responses, requests, means whatever scenarios are coming and going. So you can be able to check in the PuTTY as well. Any traffic are coming from the UE side. In which tool you can easily see the delay? Wireshark. All these things you have to get it in the Wireshark. All the events, all the messages, all the interfaces, diameters, all these things will be kept in the Wireshark. Yeah, but what I wanted to say is regarding the jitter, regarding the delay and packet loss. All these things, jitter, delay, payloads, all these things will be captured in the Wireshark. Okay. You have to just edit your column in the Wireshark. Means which packets you have to send in your Wireshark. So you just edit the column and you get all these things. Okay. It's a golden standard. Yeah, right. 99% use
Wireshark are using for IMS and SIP packets in whole the country. Okay. Yes. So those who are after this course will provide interview. I have one Guys? question here. Yes, yes. Yeah, this session, whatever we're talking, will be in English only, right? No. Session will be mixed language. Mix, okay. Because I don't understand Hindi. So that's why I'm asking. Both the language will use during Okay. session, because we have both English and Hindi audience. So both the language will use to understand. No, if the completely if we are using like Hindi, then I cannot understand. Able to understand then. No, it's a mix of Hindi and English. Okay. First use Hindi, then we'll go translate in English. Yeah, thank you. And the technical things get easily connect people. So one thing, how will we? So will we get any recorded sessions, or if we want to, or any documents we will get to revise? Yes. We'll provide recording as well. That's why we are using Microsoft Teams instead of Google Meet, because our all session will be recorded. Yes. So another question, I'm having 12 years experience. Is it qualified? I'm over experience. No issue. We'll modify your 4 to 5 year or something 4 year in IMS domain. Let's see. You are in Reliance Jio, right? Right. Yes, I guess. Same thing. IT sector में आज Sorry, sir. विकास ये वॉइस दूर से आ रहा है यूज. एक सेकंड. देवाशीष, you Yes, are also working for Volti. Customer complaint में आप Volti चेक करते हो ना? हाँ एकदम. Volti से aware हो? Volti, which QCI Volti is working? QCI 1. QCI 1. And for QCI for video call? For video call we are using QCI 2. Okay. And for signaling? For signaling QCI, we are using 5. QCI for HSI, QCI 5 for signaling. IMS signaling. Okay, great. So the things already you know. Okay, so we'll modify your CV for 3 to 4 years, and not your experience is at 12 years. So you can go it, no issue. Yes, समझ गया. Thank you. Yes. जब तक मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा तो नोबडी हायर यू. ठीक है. और हमारा ट्रेनिंग देने का पर्पस ही है ना, आपको मॉडिफाई ही करना है ना, ट्रांजिशन. हाँ. तो 3 महीने में जो हमारे पास लर्निंग है उसमें से आपको इतना देंगे, यू कैन ऑल्सो ट्रांजिट दिस डोमेन. वही सर, कुछ वो डर लगता है बहुत ज्यादा करियर में आगे क्या. अभी कुछ नहीं हुआ. मेरे पास तो 15, 18, 20 वाले भी आ रहे हैं. मैनेजर लेवल के लोग आते हैं. ठीक है सर, है ना. ठीक है. देखो क्या होता है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग 100% थ्योरी, वी आर प्रोवाइडिंग 70% practical, because all these log we have available. Okay. If you are providing practical thing, it's easy to understand you. Okay. जब आपको समझ में आएगा तो आप बोल सकते हो सामने वाले को. जब आप बोलोगे तो सामने वाला आपको हायर करेगा. नहीं बोलोगे तो 3 लोगों को मैंने लेफ्ट किया था, उनको प्रॉब्लम था अपने आप से. करेक्ट. ये चीजें हैं. So guys, who is going to join tomorrow session? Raise your hand. Sir, another question too. Yes. Go ahead. Is this all topics could be possible to cover by 3 months, or sometimes some student may? No. It's a topic will cover in 3 months. If we go with AWS, it will take 4 months. If require some support from you further, then further, what is in your package? Membership till selection. Will support till your selection. Okay, sir.
It will take time. If you will not select in 3 months, we'll support for next 3 months. If you will not select in next 6 months, we'll support till your selection. Can you some reference from the Bangladesh? Bangladesh, yeah, you can refer from Bangladesh, no issue. I mean, you can refer. Yeah, yes. I will refer most of the opening in Ericsson. Yes, okay, Ericsson working in Bangladesh as well, and most of the operator. So we have lots of effort, lots of reference. Ericsson and Huawei basically working. Huawei तो इंडिया से बंद हो गया, तो इंडिया के लोगों से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ना. Okay, sir. I want to share one practical thing. I need to understand that this is to basically Vishal sir. So that is a few days ago we have find some issues in the network like that. Uplink speed problem is very lower in some area. In some area, I mean some specific area. So after that we found that there is a high retransmission in the PGW. So PGW have two servers. Two server one there is no load balancing as per the vendor, but found that there is a highly utilized in the one server. So what could be the actually issue in this retransmission? Also packet delay and packet loss of and the control plane. If suppose in your network packet loss is available, so packet delays happen. So packet delay is the region of retransmission. Okay, so this type of sort of problem could we identify from the log analysis? I mean from the. Yes, you can identify in IMS node. Whatever problems comes into picture will guide how to read the things and how to analyze the thing, on how to correct the thing. Everything will provide to you. So will I be able to? Yes, you can able to read the trace PK file. Suppose अगर आपका यहाँ कोई कॉल ड्रॉप हो गया तो आरएफ इंजीनियर वहां जाएगा, चेक करेगा आरएसआरपी ठीक है, अलार्म बिलार्म सब ठीक है. लेकिन एक कोर इंजीनियर जो होगा ना, विल टेक ट्रेस ऑफ पर्टिकुलर नंबर, MISDN पे वो ट्रेस लगाएगा, वहां से चीजों को एनालाइज करके जस्ट 1 to 5 मिनट में आंसर देगा. व्हाट इज द रीजन? Drop region due to core issue or radio issue or network issue. This level candidate is getting 25 to 30 lakh instead of RF engineers. They are getting 3 lakh to 15 lakh. This is the limitation. Our limitation is to identify the till only the RSRP and like that. Yes. So now you will be able to learn something, right? Hopefully. Okay. So guys, who is going to attend by tomorrow session, raise your hand so that we can understand. By tomorrow we'll take next 2 hours for pure technical. Raise your hand. Only 5 candidates. Rest are still happy with telecom? Can I say something? Can I say something? Yes. I think I'm not sure if in India 5G with standalone is already working and voice over NR is active. Oh no. Yes. No. In Reliance Jio, VONR is already tested, and the VONR nothing. It's same like VoLTE. Yes. I wanted to say. I wanted to say that knowledge that you are offering now for this is valid for VoLTE and voice over NR as well. Yeah, working. Reliance Jio testing already done in last 2 years back, and some of the areas or circle they are working on a VONR, and the same IMS is sitting in a 5G. So nothing new. Yeah. The first time learning, if you want to learn SIP, then same IMS will sit in 6G, because in every technology voice is necessary things instead of data. Exactly. Yeah.
So one-time learning and take behalf of learning, you can earn money. Nothing to Exactly. learn in more. If you are looking for 4G protocol, you have to learn 5G protocol. 6G is coming, you also spend the money and learn 6G. This SIP protocol is one-time investment for your future job opportunity in open market. Exactly. So, yeah. So everything will provide on practical things which will help to migrate yourself. So why tomorrow you can join 8 p.m. to 10 p.m. same link. Okay, so tomorrow we'll take totally technical session, no non-technical session, and tomorrow will be the first class of our batch also. Some candidate also enroll with me for further. Okay. Amit Sharma, Jitendra, what about you? Swati, Vijay? Most of the things you missed, you joined late. Yeah. Myself, Vijay. I joined late. Okay. So I Vijay, was looking for this voice. you joined on time, but you not unmute yourself on that time. I No, I called just your name joined 2-3 10 times. minutes. 10 minutes back only I joined. Okay, no It issue. may By be tomorrow. some other Vijay. Okay. Okay. It might be some other Vijay. No So I issue. joined 10 minutes ago. Okay. So like I just want to know like you were told like the Ericsson Voices KPI session. So I'm looking No. for. Tomorrow, today is we are not taking OSS KPI. Today demo was based on SIP and IMS. By Okay. tomorrow or day after tomorrow, we'll schedule those who are Yeah. still looking for RF optimization. But on that, we have restriction. If your experience is greater than 10 year, will not consider because no life in RF optimization or radio side. This course, Understood. this course, Understood. yeah. So just want to know like I have experience in the opti in the 3G. Okay. So I just want to know explore in the LT. That's it. So Okay, not for no the issue. opportunity. No issue. That is Join. not for the opportunity. Okay. No issue. Yeah. Join Thank tomorrow you. technical session of SIP and IMS. If you want to enroll in this module, you can enroll yourself. If you want to still learn 4G optimization, will help to guide you. Okay, don't Yeah. worry. We Thank have you. lots of things to provide a current youth. Okay, Right. Yeah. and Thank you. yeah. So guys, same link you can join by tomorrow. Okay. Thank you very much. So, sir, Thank you. any common group? या अगर किसी का क्वेरी हो पूछ सकते हो नो इशू आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स Sir, course price. course price will be 38 along with AWS and 30,000 for SIP and IMS only. Okay, sir. SIP and IMS will cover in next 3 months. If you want AWS, it will take 1 month. Okay, our totally module will be based on practical only. Okay. Okay, sir. Payment in one time. We have EMI option. You can pay in 3 EMI. If you want to pay by credit card, we are also accepted. Okay. ठीक है. Thank you, sir. Yeah. Part of the join करो for taking the technical session. By tomorrow we'll start. Okay. And the session will be on weekend evening 8 to 10. Is it okay for all? Those who are going to take session by tomorrow? Okay, sir. All the sessions are in weekends only. Yes. Most of the candidates in working in tower telecom, they are already frustrated working in morning to a night hour. That's why we proposed on weekend. At least one day they put effort. Okay. I'm right or wrong? Obviously, they may expect same thing. It's okay. Okay, so let's meet by tomorrow.
Thanks to all. Thanks, Vikas. Yeah, thanks. Yeah, thanks, team.